Yikes. Okay. The Chinese embassy in the U.S. If the United States wants war, be it a tariff war, a trade war, or any other war, we are ready to fight to the end. U.S. Secretary of Defense Hegseth responded to China, "We are ready. Those who thirst for peace must prepare for war." Wait, that doesn't even make sense. Those who thirst for peace prepare for war. No, peace doesn't mean war. By the Chinese embassy. Quote, What the hell? war is what the U.S. wants. Be it a tariff war, a trade war, or any other type of war, we're ready to fight till the end. I don't want another war. As Secretary of Defense, how do you take that? Well, we're prepared. Those who long for peace must prepare for war. Okay, when you hear it in the tone, that makes a lot more sense. Meaning that if you have peace, you want to sustain peace, you got to be prepared for those who want to take it from you. And if people want to take it from you, then you got to be able to protect and defend that peace. So that when I hear it in that regard, that's at least what I'm picking up. I'm picking up what he's putting down, if that's what that is. That's why picking we're up. rebuilding our military. That's why we're reestablishing deterrence and the warrior ethos, is because we live in a dangerous world with powerful ascendant countries with very different ideologies. You mentioned defense spending. They're rapidly increasing their defense spending. I think he's bringing up a good point with like other countries have different ideologies. I feel like most Americans right now are okay with other countries having different ideologies. Totally fine. But let it stay over there. Respect their tradition by letting it be over there. Let's not encroach our own Western ideas and impose it on them, right? Because it won't work. And let us try to focus and develop ourselves. Spending modern technology. They want to supplant the United States. If we want to deter war with the Chinese or others, what's up, Yosh? We have to be strong. And that president understands peace comes through strength. He also has a great relationship with that gentleman right there, too, Xi Jinping. So where we can partner, where we can cooperate to recognize that we don't want war with China. We don't seek. Yeah, I definitely don't want war with China. I genuinely, I'm not saying that I'm terrified of China, but I think we underestimate China. I think a lot of people would say online like that they're Indian, or not Indian, that they're paper tigers. Excuse me. I don't think they are. I think China is a very clear number 2 superpower of the world. That war. We will, and the president has sought historic peace and historic opportunities. But my job as the Secretary of Defense is to make sure we're ready. We need the defense spending, the capabilities, the weapons, and the posture in the Indo-Pacific, which is something we're very much focusing on. China has Indo-Pacific. said they're going to up their defense spending 7.2%. Great relations with India for coming. With a struggling economy. We're getting mixed messages on that. As Secretary of Defense, you always want more money. Absolutely. At the same time, DOGE is in there cutting back and speeding up the systems, making it more efficient. Doge is cutting back where there's actual waste. If there's a need for defense and it's a provable need and we could show that the money's going to be used efficiently and effectively, that's a completely different scenario. How much money are you asking for when you talk to the president or when you talk to the Treasury Secretary in this budget? How much more do we need? Because we watched it, the defense spending was not even keeping up with inflation over the last 4 years. My message has been I'm both a fiscal hawk and a defense hawk, and I think America First represents both with peace through strength. So DOGE is going to cut fat where we need to, and we're going to reprioritize on the right things. So it's not about a fixed dollar amount, Brian. It's about addressing the president's priorities: Golden Dome, southern border, modernization, hypersonics. Golden UUVs, Dome is interesting. UAVs, the fight of the future against for us China. to have our They own know like we're serious. anti-missile We're defense building system, for that. So kind of like Israel. Insane. And I don't want to say speaking of Israel, but speaking of Israel, all the information that's getting disclosed, supposedly this administration, what do you have the least faith that we're going to come to Epstein, a conclusion? for sure. Epstein. And I think it's because of Israel. their manufacturing power. If you go to war, your weapons can't be resupplied like China can do. That's why I'm terrified. I feel like China has the ability, and since their government and everything works intangibly with them, they have the ability to crank, plus their population, just crank out so much so that it's just overwhelming. I think that because I mean, when you really dig into Epstein,
his entire network was Israel. It was clearly like Ehud Barak was the ex-prime minister and the ex-head of Israeli intelligence. Leslie Wexner was one of the most powerful pro-Israeli philanthropists. The whole organization was Israel. So and I'm not saying it was all of Israel. It was all an intelligence gathering, and it was targeting Americans. It was targeting American officials and the American president. Right. And what's interesting is party. You can talk about this now, Exactly. post October 7th. It opened it wide open. Post Gaza. You want to know a funny story? Insane. Actually, I didn't know shit about it. And I started doing 9/11 stuff. And I was doing a 9/11 video on my YouTube, and I knew about the dancing Israelis conspiracy theory that is very much a real set of documents. And I knew that I'm not allowed to talk about Israel for some reason, and I didn't really know why. And I realized, like, I better fucking understand this thing before I crater my new channel and career on this topic I don't understand. If I'm going to take a stance against Israel at all, I should understand why and how. And so that was a treat for the full JRE episode. Is connected to one race of people. Yeah. It's correct. Whereas the United States, which also is involved in a lot of really fucked up things all over the world. When people think about the United States, they don't think about it as one. Bingo. Yeah. Yep. And so it just puts us all in this impossible situation, and it's an impossible conversation. It is kind of an impossible conversation, especially with the zeitgeist and everything going on. If you want to know more about the dancing Israelis, you could pause and look at that. I'm not going to go any further on that, but just waiting on the unredacted Epstein client list. Yeah, I don't think, as he said in this video, I don't think it actually comes out, which is kind of frustrating. But all of this being said, the globe, the world is going to have to get ready for April 2nd. Or at least that's what Trump is saying. What will India and China do? I don't know. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रिसेंटली प्रेसिडेंट फिर से बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहली बार गए यूएस के पार्लियामेंट में और ऐसा स्पीच दिया जो पूरी दुनिया में गूंजा है। ट्रंप ने देखिए दुनिया के सामने एक डेट रख दी है 2 अप्रैल, और आप नोट करना इस डेट के बारे में हर कोई लिख रहा है। I think it's funny that he's so self-aware. He's like, I can't announce anything big for April 1st because everyone's gonna think it's April Fool's. So we're gonna do April 2nd. हर जगह आपको ये डेट मिलेगी। यूएसए इंपोज करने वाला है रेसिप्रोकल टैरिफ भारत, चीन और दुनिया भर के कई देशों पर 2 अप्रैल से। ये देखो, मैं आपको बता दूं, भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ट्रंप ने ये डिक्लेयर किया है कि 2 अप्रैल को ना ये इतने बड़े बड़े टैरिफ लगा देंगे पूरे दुनिया भर के देशों पर कि यूएसए विल नॉट जस्ट बिकम ग्रेट, ये कह रहे हैं यूएसए विल बिकम रिच, मेकिंग अमेरिका रिच अगेन। ये नारा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस पार्लियामेंट से। Tariffs are about making America rich again and making America great again, and it's happening, and it will happen rather quickly. There'll be a little disturbance. I just see that as negotiations between governments. That's all I hear whenever I hear tariffs. We're going to find out, though, with Canada and Mexico and everything going on. बड़ा अजीब सा लगता है और खराब लगता है। Month of March is going to be crazy. प्रॉब्लम ये है कि जब ये जोक कर रहे होते हैं ना, आपको बहुत ही ज्यादा सीरियसली सुनना होता है, बिकॉज ही इज परहैप्स द मोस्ट पावरफुल इलेक्टेड ऑफिशियल इन द वर्ल्ड। और एक बात नोट करना, ट्रंप ने जब बोल दिया कि 2 अप्रैल तैयार हो जाओ, बड़े टैरिफ आने वाले हैं, चाइना का रिएक्शन देखिए। चाइना की तरफ से एक सेंटेंस आया है, अगर यूएसए को जंग चाहिए ना, चाहे किसी भी टाइप की, चाहे टैरिफ की जंग चाहिए, किसी और टाइप की जंग चाहिए, हम तैयार हैं जंग के लिए, चाइना लड़ेगा। मतलब आप कह लीजिए कंप्लीटली ये ट्रंप को चैलेंज कर रहे हैं कि लगाओ टैरिफ, हम भी लगाएंगे टैरिफ, देखते हैं सस्टेन कौन कर पाएगा, किस देश की जनता लंबे समय तक, जो महंगाई आने वाली है, जो इन्फ्लेशन आने वाली है। क्योंकि देखो सीधा सीधा यहाँ पे हिसाब किताब सिंपल है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर कोई देश अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे लगाता है टैरिफ, इनकी सरकार भी लगा देगी उस कंट्री के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ। नाउ टैरिफ का देखो मेन एंड में जो झटका लगता है वो उस देश के आम आदमी को लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर यूएसए की हार्ली डेविडसन जो बाइक है, मान लो 25 लाख रुपए की होती है इंटरनेशनल मार्केट में, भारत सरकार पहले एक टाइम पर टैरिफ उस पर लगाती थी मान लो कि 100%, तो इन दी एंड भारतीय मार्केट में वो बाइक आती थी 50 लाख रुपए की। इन दी एंड पैसा ज्यादा किसको देना पड़ेगा? भारतीय खरीदार को, अगर वो खरीदता है वो बाइक। सिमिलरली अब ऐसा तो है नहीं कि यूएसए की जो बड़ी आबादी है ये खरीदना बंद कर देगी, ये कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सब अभी भी खरीदेंगे।
मगर जब डोनाल्ड ट्रंप लगा देंगे चाइनीज इंपोर्ट्स पर और इवन इंडियन इंपोर्ट्स पर टैरिफ, तो अमेरिकन जनता को अपनी जेब से ज्यादा पैसा निकालना होगा। तो चाइना I guess I'm confused on. I've only heard of these tariffs on China, Mexico, and Canada. What tariffs are being implemented on India? I thought that India dropped a lot of their tariffs, 100% tariffs on EVs, I believe, and in like response to this, just in warning. I thought America and India were in good terms. So I don't know too much about this idea of it going against China or India, but China I'd be interested in. The tariffs against Canada and Mexico, will the average people feel it? Absolutely. But the average Canadian person or Mexican person is going to feel it way more than the average American person. इसलिए कॉन्फिडेंट है कि लंबी ट्रेड वॉर करनी है ना, कर लो, हम इस बार रेडी हैं। ट्रंप ऑलरेडी 10% के टैरिफ लगा चुके हैं चाइना पर, कहा है एडिशनल 10% और लगाऊंगा। और फिर 2 अप्रैल को तो इंडिया, चाइना समेत कई कंट्रीज पर जो ऑलरेडी बहुत सारे टैरिफ्स यूएसए पे लगाकर बैठे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ लगेंगे। नाउ चाइना बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव रिस्पॉन्स दे रहा है। इन लोगों ने अपना डिफेंस बजट भी बढ़ा दिया है एक ऐसे टाइम में जहां पर ट्रंप कह रहे हैं कि यूएसए अपना डिफेंस बजट 50% कम कर सकता है। चाइना ने अपना डिफेंस बजट अब $250 बिलियन ऑफिशियली, जो ऑफिशियल नंबर्स हैं। I think that's just us saying, "Hey guys, we're cutting our defense budget." Wink, wink. You know what I mean? And we're calling it something else now. वहां तक ये अपना डिफेंस बजट ले गए हैं। तो चाइना बहुत Instead of defense budget, now we have an offense budget. ज्यादा अग्रेसिवली बात कर रहा है यूएसए से। कनाडा में आप अगर देखो, मैंने इसमें वीडियो बनाई थी, वहां पे तो जो पॉलिटिशियंस है वो कह रहे हैं हमें न्यूक्लियर वेपन चाहिए यूएसए के अगेंस्ट। और कनेडियन गवर्नमेंट ने भी 25% के टैरिफ इंपोज कर दिए हैं यूएसए पर। फिर यूरोप की मैं अगर बात करूं तो इमानुएल मैक्रोन ने अपने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि हम एक बहुत ज्यादा कठिन युग में है, मैं पूरे देश के लिए एक मैसेज दूंगा। तो जो फ्रांस का Actually, we got to listen to what he has to say, because he went out today, I believe, as of going live, and said that all of Europe should prepare for war for Russia. टाइम जोन है, उसके हिसाब से इमानुएल मैक्रोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच देने वाले हैं, जहां पे मोस्ट प्रोबेबली ये फ्रांस के लोगों को बोलेंगे कि फ्रांस में बनी हुई चीजें परचेज करिए, ट्रेड वॉर स्टार्ट होने वाली है। नाउ इंडिया का रिएक्शन क्या है? देखो, इंडिया का रिएक्शन मैं कहूंगा अभी के लिए ना बहुत सॉफ्ट है। और कहीं ना कहीं पर्सनली मैं यहाँ पे अपना एक थॉट शेयर करना चाहूंगा, मुझे लग रहा है हम थोड़े से ज्यादा ही सॉफ्ट हो रहे हैं। I think India is focusing on building an इंडिया की infrastructure right स्ट्रैटेजी ये now. है कि Not पीयूष गोयल साहब जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, global affairs. इनको हम भेजेंगे यूएस। बाय द वे ये ऑलरेडी यूएस पहुंच चुके हैं। 4 मार्च से लेकर 6 मार्च तक ये रहेंगे यूएसए में और ये बातचीत करेंगे यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से। और कोशिश ये की जाएगी कि So he may leave tomorrow. Man, I wish he could stay for one more day for the crypto talk on Friday, on March 7th. 2 अप्रैल 2025 से पहले यूएसए इंडिया के बीच में एक ट्रेड पैक्ट साइन हो जाए, ताकि टैरिफ लगे ही ना। इंडिया भी अपने टैरिफ कम करे, इंडिया भी अपनी मार्केट अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए ओपन करे, सिमिलरली यूएस भी करेगा। और जो थोड़े बहुत संकेत आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि टेस्ला ने इंडिया में हायरिंग शुरू कर दी है। टेस्ला मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इसी साल ये अपने शोरूम्स ओपन कर देगा इंडिया में और ये गाड़ियां अपनी बेचनी स्टार्ट कर देंगे इन द इंडियन मार्केट। और एक बार को सोच कर देखना, ये वही इलॉन मस्क थे, ये वही टेस्ला थी जिसको नितिन गडकरी साहब ओपनली कहते थे इंडिया में मैन्युफैक्चर करो तभी इंडियन मार्केट की एंट्री मिलेगी। अब आज के समय आप देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए, इलॉन मस्क उनके कंधे पर बैठे हैं, अनऑफिशियल प्रेसिडेंट। तो सारे दरवाजे आराम आराम से खुल रहे हैं, जहां पर जो रुकावट थी सब रुकावटें हटाई जा रही है। ना गोयल साहब की जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये अमेरिकन के साथ ऐसी बात I see this being a good meeting. I foresee good things to come out of टाइम this. बहुत कम है। हम ऑलरेडी, आप अगर डेट के हिसाब से देखें, 5 मार्च आ चुका है, 30 दिन से भी कम बचे हैं। क्या इतने कम समय में भारत और यूएस एक ट्रेड डील कर पाएंगे? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। बट एक लार्जर सवाल ये आता है कि क्या इंडिया को भी कहीं ना कहीं एक प्रॉपर जवाब देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को या नहीं? रीजन मैं आपको समझाता हूं क्या है। पाकिस्तान को रिसेंटली यूएसए ने ये अनाउंस कर दिया है कि $400 मिलियन की मिलिट्री एड ये प्रोवाइड करेंगे, ताकि पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट है इनकी। This is what we were talking about this morning on stream, right? With the USA funding $400 million. Now, can we confirm that it's actually for military maintenance for F-16 bombs and munitions and whatnot,
or is it $400 million in hopes that it's being built towards infrastructure, education, and stuff like that within Pakistan? कि मेंटेनेंस हो पाए ये Like at this point, if America is going to give money to other countries, I think it should be in stipulation for one, their resources, and two, only to be used for infrastructure, education, or whatnot. They're gonna find ways to manipulate and funnel that money to this regardless, but at least make it harder than just giving it straight for maintenance and bullshit. ये सीधा सीधा झोल है। ये मैं आपको बता चुका हूं 2022 में बाइडन ने 450 मिलियन दिए थे। अब ट्रम्प के अंडर फिर से ये 400 मिलियन दे रहे हैं। हर 2 साल में पाकिस्तान को 450 मिलियन डॉलर्स चाहिए अपने फाइटर जेट्स की देखरेख के लिए। और ये तो हम तब बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान किसी वॉर में इन्वॉल्व है नहीं। F-16 फाइटर जेट्स को बहुत ही रेयरली ये लोग यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप पार्लियामेंट में खड़े होकर, जहां पे एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं टैरिफ लगाऊंगा चाइना पे, इंडिया तो देखिए बहुत टैरिफ लगाता है, अलग से डोनाल्ड ट्रंप थैंक यू बोलते हैं पाकिस्तान को और ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने रिसेंटली आतंकवाद से लड़ने में यूएसए की हेल्प करी है। एक एक्चुअली क्या था कि अफगानिस्तान से जब यूएसए पुल आउट कर रहा था ना साल 2021 में, तब काबुल के एयरपोर्ट में, काबुल बीइंग द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, वहां के एयरपोर्ट में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो जो आतंकवादी See, Yash, look at you. It's all about the money. पाकिस्तान ने रिसेंटली Yash is making a good point about this. If America likes selling bullets, bombs, and power, having F-16s is one of those things to showcase that. It's like it's a very hot selling commodity that we have on our catalog of war destruction that other countries can buy. And if one of our prized possessions is out on the front line, failing and looking bad, especially against Russian and Chinese fighter jets, it's going to make our whole catalog look bad. So we got to make sure that if somebody buys these nice pieces of equipment, we got to make sure that we help them with upkeep and the maintenance and whatnot. We'll even send you a little bit of money. उसको पकड़ा दिया डोनाल्ड ट्रम्प को। Yash, that is so. I think you're right on the head on that one. I think यूएस पार्लियामेंट में बोल दिया और ये भी बोल दिया, hit that right on the head. Thank them. Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. Damn. What do you think they're gonna do to him? Torture him? Give him a silver bullet? It's crazy that it's honestly sad that half the room wouldn't clap for something along those lines. Like some of these things that Donald Trump was talking about should have been a bipartisan issue that all of America should be able to stand behind. Especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, पाकिस्तान को अगर थैंक यू बोल दिया, ना सिर्फ पाकिस्तान, स्पेसिफिकली द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अगर थैंक यू बोल दिया, तो इससे क्या इंडिकेशन मिलती है? इंडिकेशन ये मिलती है कि और बहुत सारे डॉलर्स पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए डोनाल्ड ट्रंप रिलीज करेंगे इन द फ्यूचर। इसकी एक सीधा एक इंडिकेशन इसकी मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी रहने वाली है, इसमें ये पाकिस्तान के साथ यूएस के रिलेशंस इंप्रूव करके रखेंगे, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमास की एंट्री हो चुकी है। खैर अब वहां पे कहीं ना कहीं इंडिया का भी इशू आता है, इंडिया भी हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता नहीं है, तो वहां पर हम ओपनली यूएसए को डायरेक्टली ब्लेम कर भी नहीं सकते। बट क्लियरली एज इंडियंस हमको एक बात ध्यान रखनी होगी, अगर यूएसए के साथ ट्रेड डील हो पाती है इस महीने के अंदर अंदर, जो एक मिराकल होगा अगर हो जाती है, अगर ट्रेड डील हो जाती है, वेरी गुड। दुनिया भर पे टैरिफ लग रहे होंगे, इंडिया पे कोई टैरिफ नहीं लगेगा। हो सकता है हमारी स्टॉक मार्केट जो काफ़ी करेक्ट हो गई है वो भी इसके रिस्पॉन्स में थोड़ा सा ग्रीन मूव दिखा दे, मे बी। बट मान लीजिए कोई ट्रेड डील नहीं हो पाती, ट्रंप लगा देते हैं टैरिफ, तो उस केस में कहीं ना कहीं मेरा मानना है तो इंडिया को भी यहाँ पर एक सख्त रिप्लाई देना होगा यूएसए को, क्योंकि अभी तक हमारी कोशिश यही रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को हम एकोमोडेट करें। जो भी इनकी कुछ ऊटपटांग स्टेटमेंट होती है हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा उस पर रिएक्ट ना किया जाए। टैरिफ की धमकियाँ होती हैं, हम कोशिश करते हैं कि मामला नेगोशिएशन से, बातचीत से सुलझा लिया जाए। बट 2 अप्रैल को अगर ये भारत पर भी लगा देते हैं टैरिफ, देन इन दैट केस हमको भी कहीं ना कहीं चाइना जैसा रिस्पॉन्स तो नहीं। I'll be curious because I don't know what tariffs India currently imposes against America. India dropped a lot of tariffs.
So I wouldn't imagine that India is showing that they're trying to take advantage of America. And I'm hoping, and I'm sure we'll get more information within the next 24, 48, 72 hours on how the conversation went during this meeting. But I foresee good things. And I won't just say that, I'll give reasons behind it. India is the pharmaceutical hub of the world, right? A lot of countries, not just America, get their medicines from India, not just China. India is doing a fantastic job in terms of manufacturing. They have plenty of port access. Logistically, India is closer to China, so shipping times would be cut down drastically. Now pair that with the strait that's going through Saudi Arabia. You pair that with India. America has a good relationship with Saudi Arabia. That's why it's crazy to see that like Americans would stand on ethics on like world like against Ukraine and Russia. It's like we're supporting Saudi Arabia. Wouldn't that go against your morals? But back on track, like there's just a lot of things that make practical sense, aligning more business wise, more business oriented with India. And for India, you would want that because you want to be a number 3 or a top 3 superpower by 2047. In order to do that, you're going to need bullets, money, power, baby. बट कहीं ना कहीं यूएस को बताना होगा कि इंडिया भी रिप्लाई कर सकता है टैरिफ्स का। तो फाइनली आप लोगों से मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप लोगों के हिसाब से भारत को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि डोनाल्ड ट्रंप को हम एक प्रॉपर रिप्लाई भी दे पाए, क्योंकि अगेन 2 अप्रैल पास आ रहा है और ये जो डेट है ये हिस्ट्री में याद रखी जाए। I don't know what, and this is not to be disrespectful, I don't know what India's top export is, but if India can say that they can invest 100 million, 1 billion, 5 billion, whatever it is, into American businesses, and maybe just even say like have a focus on like the Indian Americans who are here, I think that would be a really cool thing. जाएगी, दिस विल बी अ मोन्यूमेंटल डे। दुनिया भर में कई कंट्रीज के बहुत सारे इराटिक रिएक्शन आने वाले हैं। सो मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है, शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप This is true. It's going to be a new age job. However, I think this job, data analytics, is going to get replaced by AI. I think if you're a young kid, young man, I think the best thing for you to do right now is learn about AI, learn how to learn AI, all you can about AI, learn all you can about critical thinking, philosophy, human emotions, that kind of thing, and focus on your health. I think if you could focus on those 3 things, everything else will fall into place. It's about 100 to 150 billion to US. Well, still commit what you can to like US development, like saying like India is going to focus on $100 million on, I don't know, maybe data storage, like building storage centers. Maybe they help build like crypto mining facilities, but it's in America for American products, and maybe they could do it in a way that's incentivizes Indian Americans to work. I don't know. I'm trying to think outside the box on this one, but I think the simple term is tell Trump, hey, we're going to invest a lot of money in America, baby, and I think that gives you the green pass or the green thumb, and actually, you know what? It might get you the gold Visa card. The path to citizenship, you know, like that's legitimately what I think he's just concerned with right now is how does America get wealthy? If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics. And even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch. Twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions. And after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active.
Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.